Good morning, students. We are doing respiration in organism. This is part 4, chapter 10. Today we will learn about lungs, the respiratory organ, the main respiratory organ. Okay, let's start. Lungs, the respiratory organ. Mainly when we think about respiratory system, we think about lungs. There are two elastic lungs in the thoracic cavity surrounded by a thin pleural membrane that provides the lungs with space to expand. Means lungs is made up of an elastic membrane that is called pleural membrane, and which gives the elasticity to expand and contract. Lungs, being extremely soft and fragile, are guarded by the rib cage from outside. Lungs, liver, heart, all are protected by rib cage. The left lungs is slightly smaller in size to accommodate the heart. Left side is heart, so it is slightly smaller. Lungs is made up of tiny sacs known as alveoli. The smallest part of lungs is called alveoli. It is a small balloon type things. The alveoli are balloon-like structure found at the end of the bronchioles and surrounded by capillaries. Okay, capillaries, why? Because here exchange of gases occurs, and these gas are coming through blood, and last finest part of blood is blood capillaries. Here is a exchange of gases occurs, and there is a very fine exchange of blood vessels, that is capillaries, which we will learn in higher classes. The alveoli have very thin lining that allow gases exchange between the air. और alveoli में ही जो है एकदम से लास्ट में आकर के जो है CO2 comes into the alveoli and oxygen goes to the blood capillaries through alveoli. वो O2 चला जाता है, CO2 को ले लेता है. कहाँ होता है? All happens in alveoli, inside the alveoli. Gases exchange between the air that enters the alveoli and blood passing through the capillaries. Muscles participating in respiration. What is the role of muscles? Diaphragm. Diaphragm is nothing, an imaginary line in the lower part of the lungs, heart and liver, and above all of abdomen. Abdomen के ऊपर there is a imaginary line. You can feel it just beneath the rib cage. Rib cage के नीचे जो आपका part है, that is called diaphragm. Diaphragm is the most important muscle that forms the floor of the thoracic cavity. Additionally, there are intercostal muscles between the ribs that assist the diaphragm. You can feel when you starts breathing, when you takes oxygen, your diaphragms contracts. पेट जो है ना अंदर की तरफ आपका लगेगा कि अंदर चला गया, और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका पेट लगेगा जैसे वो बाहर की तरफ आ रहा है. तो फर्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम डायफ्राम. जब कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या करता है, वो अपने नेक्स्ट पार्ट को जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है. इट पुल्स द next part pulls another next part, another next part pulls another next part, so that it starts from diaphragm. Diaphragm pulls lungs, lungs pulls bronchiole, alveoli pulls bronchiole pulls trachea pulls, and this way everything pulls. They are pulling, so that air is just pulling inside the nostril
nasal part and comes to the alveoli. वो खींचते 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 ऑक्सीजन को अंदर खींच लेते हैं. और उसी तरह से when we relax, डायफ्राम फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स. तो रिलैक्स होगा तो क्या होगा, वो अपने बगल वाले को भी रिलैक्स करेगा. सो दैट लंग्स रिलैक्स, सो alveoli relax, then bronchiole relax, then trachea relax, then nasal part relax, then nostril relax, सब रिलैक्स कर रहा है. तो क्या हुआ, CO2 जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स होकर होते 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 वो बाहर निकल जाता है. So let's see what your book says. How do we breathe? The breathing cycle consists of inhalation and exhalation. One breathing means one inhalation, one exhalation. Is also referred to as external respiration. Different steps in the process. First, inhalation. पहले हम लोग सांस लेते हैं. The intercostal muscles contract. Intercostal muscles कहाँ है? In diaphragm. Diaphragm is the most important muscle that forms floor of the thoracic cavity. Additionally, there is a intercostal muscles between the ribs and between the diaphragm. Intercostal muscles contracts means diaphragm contracts. That makes the ribs move upward and downward. और उससे क्या हुआ, ribs भी upward downward move किया. The diaphragm contracts, moves downward and becomes flat. You can feel it. सांस लो तो देखोगे your abdomen becomes flat. This results in increase of space inside the thoracic cavity and thus decreasing the pressure. Increasing the cavity space and decreasing pressure. Subsequently, air from the outside गशेज इन, मतलब रश करता है अंदर आने के लिए, रिजल्टिंग इन इनहेलेशन, और फिर इनहेलेशन अकर्स. नेक्स्ट, एक्सेलेशन, जस्ट ऑपोजिट. इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, दस मेकिंग द रिब्स मूव्स डाउनवर्ड इनवर्ड. तो क्या होगा कि रिब्स भी आपका थोड़ा नीचे आ गया, इनवर्ड हो गया. एडिशनली, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम गिव्स अप the shape of a inverted U. Relaxation of diaphragm give it the shape of a inverted U. U के शेप के जैसा वो रिलैक्स कर रहा है. The space inside the thoracic cavity is decreased. और ऐसा होने से जो अंदर में जो स्पेस था वो डिक्रीज कर गया. तो उसका क्या करेगा, तो फिर वो दबाएगा, डिक्रीज कर रहा है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ प्रेशर. स्पेस डिक्रीजिंग, प्रेशर इंक्रीजिंग. प्रेशर दबाएगा तो क्या होगा, वो जो गैस था हमारा CO2 वो ऊपर की तरफ जाएगा, एक दूसरे को ढकेलते हुए. एयर नाउ रशेज आउट ऑफ द थोरैसिक कैविटी थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सेलेशन. एक दूसरे को पुश करते करते, क्योंकि अंदर में स्पेस कम हो गया, रिलैक्स कर गया ना, तो स्पेस कम हो गया, प्रेशर नीचे से दबाया गया, प्रेशर पड़ा तो वो धीरे धीरे निकलते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर एक्सेल हो गया. एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेलेशन. दिस इज द पिक्चर ऑफ इनहेल एंड एक्सेल. इनहेल में लुक एट, कॉन्ट्रैक्शन अकर्स. जब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो पुश करेगा, और पुश करता है तो क्या होता है कि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया. लोग स्पेस ज़्यादा है तो क्या होगा, एक दूसरे को पुल कर रहा है ना, तो दे आर पुलिंग ईच अदर, सो दैट ऑक्सीजन इज पुलिंग डाउन इनसाइड द अप टू द alveoli. एंड इन केस ऑफ एक्सेल, look, just diaphragm relaxed, so space of the lungs is also less, now less. Pressure is more, space is less. So what happens, और वहाँ पे आ गया है क्या, ब्लड स्ट्रीम कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, सो इट इज पुश्ड आउट and pushing each other. Ultimately, exhalation occurs and carbon dioxide is out in the air. Movement of chest while inhaling and exhaling. Just give some more time to understand this thing. Now some checkpoint. Fill in the appropriate word.
The airway starts with nostrils and ends at the alveoli of the lungs. Lungs are protected by thin membrane called pleural membrane. The trachea connects the larynx and bronchi. Diaphragm is the principal muscle aiding in respiration. The flap of cartilage that guards the air passage means separates air passage with food passage during swallowing of food is called epiglottis. The flap of cartilage is made up of cartilage. Thin flap divides air passage and food passage. Okay. So that's all for today. Thank you so much. Any problem? Ask me.